Yes, children, in today's class, we shall start with question number 1. Try these, page number 167, on the topic comparing quantities. We have to find out the percentage of increase or decrease in the following. The first part is price of the shirt decreased from rupees 280 to rupees 210. Okay? So let us begin. The प्राइस ऑफ द शर्ट डिक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज़ 280 टू रुपीज़ 210. मतलब इनिशियली इतनी थी, बाद में डिक्रीज होके इतनी हो गई. सो वी राइट हियर इनिशियली प्राइस ऑफ शर्ट, दिस इज रुपीज़ 280. ठीक है. नाउ फाइनली प्राइस ऑफ शर्ट, this is rupees 210, right? So decrease in price, is what? Rupees 280 minus rupees 210. This is equal to rupees 70. इस डिक्रीज इन प्राइस को हम और भी क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ चेंज. ठीक है. और लिख देते हैं यहाँ पे, राइट. सो नाउ वी फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज. परसेंटेज डिक्रीज is equal to amount of change upon original into 100%. अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो गया? 70. एंड ओरिजिनल मतलब इनिशियल प्राइस ऑफ द शर्ट वो कितना है? 280 इंटू 100%. ठीक है. ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया. 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100. तो आंसर क्या आ गया हमारा? 25%. सो परसेंटेज डिक्रीज इज 25%. ऑल राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Second part is marks in the test increased from 20 to 30. ठीक है. सॉल्यूशन लिखते हैं हम. इनिशियली marks obtained in the test कितने थे? 20. आफ्टर इंक्रीज फाइनली marks obtained in the test, this is 30, right? So increase in marks कितना हुआ? Increase in marks, that will be 30 minus 20, that is 10. 20 मिले थे, 30 हो गए तो 10 बढ़ गए ना. So increase in marks is 10. This 10 can also be called as amount of change. ठीक है. So now we can find out percentage increase. Therefore, percentage increase is equal to amount of change upon the original amount into 100%. अमाउंट ऑफ चेंज कितना है हमारा? 10 अपॉन ओरिजिनल कितना है? इनिशियली मार्क्स ऑब्टेन्ड वाज 20 इंटू 100%. ठीक है. ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया.
2 1s are 2, 2 5s are 10, तो ये कितना हो गया 5 into 10%, that is equal to 50%. So percentage increase is equal to 50%, right? Now we come to question number 2. Question 2 is, my mother says in her childhood petrol was ₹1 a liter. ठीक है, so initially price of petrol was ₹1 a liter. ठीक है, it is 52 per liter today. Finally, today's price of petrol, this is equal to ₹52 a liter. a liter का मतलब 52 रुपीज़ का 1 लीटर. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेस, difference between the two prices, this is what ₹52 minus 1, which is equal to ₹51. This is ₹51 is also called the amount of change, so I write here or amount of change. Okay, now price has increased, ठीक है, gone up, so we will find percentage increase. This is equal to amount of change upon the original into 100%. ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज कितना है 51, ओरिजिनल कितना था 1 into 100%, सो दिस इज इक्वल टू 5100%. तो देखो इतना परसेंट इंक्रीज हो गया. इज दिस क्लियर? राइट. So with this I wind up my class. In the next class I shall start with the next topic.